Assalamu alaikum everyone. This is Shibra from Gateway Study Links, and with me I have. Yeah, again, the same thing again and again. Mubarik Ali Khan from Gateway Study Links. Respected listeners, today we are with you और आज की इस वीडियो में मैं ट्राई करूंगा कि मैं उर्दू और इंग्लिश दोनों को ब्लेंड करूं क्योंकि बहुत कॉमन लेमैन क्वेश्चंस हमसे किए गए और इन क्वेश्चंस को एड्रेस करना भी ज़रूरी है। ज़ाहिर है लैंग्वेज सर्ट एक नई चीज़ मार्केट में है जिसके बारे में लोगों को उतनी अवेयरनेस नहीं है। लोग सिर्फ आईएलटीएस, पीटीई, टॉफल, ओईटी में इंटरेस्टेड रहे हैं, लेकिन अब एक नई चीज़ क्योंकि जो चल रही है तो लोग ज़रा उसके बारे में क्वेश्चनिंग कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग आवर प्रीवियस वीडियोस फर्स्ट ऑफ ऑल। और आपकी ये क्वेश्चंस हमने अपनी डिफरेंट वीडियो से, डिफरेंट चैनल से, वेबसाइट से वी डिड्यूस्ड इट। कुछ क्वेश्चंस मैंने नोट किए हैं, कुछ क्वेश्चंस में शिब्रा के पास हैं, कुछ क्वेश्चंस में शिब्रा मुझसे करने वाली हैं। मुझे पता है कि उन्होंने मुश्किल क्वेश्चन मुझसे करने हैं और कुछ क्वेश्चंस मेरे पास हैं जो मैं शिब्रा से करूँगा इंशाल्लाह। सो हम कोशिश करेंगे कि आपको एक कंप्लीट 360 आइडिया दें लैंग्वेज सर्ट का, टेस्ट के कंटेंट से हट के टेस्ट के बारे में जनरल क्वेश्चनिंग के कैसे कंडक्ट होता है, क्या क्या किया जा सकता है। आने वाले टाइम में जो ये तकरीबन 5 से 7 मिनट हम आपके साथ हैं, एंड के तक हम आप तक वैसे टिप्स एंड टेक्निक्स आप तक पहुंचाएंगे जिसमें आपको इंशाल्लाह हाई पास गारंटेड लैंग्वेज सर्ट स्पीकिंग मॉड्यूल में खास तौर पे मिलेंगे। So what is your first question, Ms. Shibra? Right. So my first question from you is that what are the different types of language cert? It's a valid question. First of all, there are two different types of language cert. लेकिन language cert की history ये है कि ये कोरोना की पैदावार है। Language cert, ELLT, passport test, password test, इसके अलावा आपका ऑक्सफोर्ड टेस्ट, ये सारे टेस्ट कोरोना के टाइम पर जब IELTS बंद हो गया तो उस टाइम पर यूके की यूनिवर्सिटीज़ ने एक्सेप्ट करना शुरू किया तो पूरी आवाम उस तरफ चलना शुरू हो गई। लेकिन अब इसकी वैलिडिटी ऑथेंटिकेशन बहुत ज़्यादा होने लगी जिसकी वजह से इन्होंने दो डिफरेंट टाइप्स इंट्रोड्यूस करवाई। फर्स्ट लैंग्वेज सर्ट ईसॉल, यानी कि ये एक ऑनलाइन वर्जन है। सेकंड इज लैंग्वेज सर्ट सेल्ट, दैट इज सिक्योर्ड इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट। जैसे कि आपका आयल्स होता है सेंटर में जाकर, ऐसे ही सेल्ट होता है सेंटर में जाकर, और ईसॉल ऑनलाइन किया जा सकता है। टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मिस शिप्रा, ESOL and CELT, online and on campus. Okay. Right. Thank you. Yes, you have to ask. Oh yeah, I forgot. I have questions too. So, what is the total time of speaking module of IELTS? Right. So the total time of speaking module is 11 to 14 minutes. It is going to be there. And may I know how this time is divided? I mean to say, how many parts are there? Yes, basically there are like 4 parts, and every part has like 3 to 4 minutes in that. So you should admit that मैंने आपके लिए थोड़े आसान क्वेश्चन इकट्ठे किए। Yes, exactly. All right. So what is your next question, Miss? Right. My next question from you is: does accent really matter in this test or not? It's a negative from my side. Accent doesn't matter in your any English test like IELTS, TOEFL, Language Cert, PTE, etc. In PTE it matters sometimes. So here pronunciation matters. For example, if you say carrier and you say career, they are two different words. If you say photographer or you say photographer, the two are taken differently. So yeah, that what matters. So in short, accent doesn't matter. So do not fake an accent. If you can make an accent, good. If you cannot make an accent, don't fake an accent. Right. Okay, my next question from you is: what is speaking assessment criteria? Of language cert, of course. Yes. First of all, they check your fluency. They also check your pronunciation. They do check your content and they check your grammatical range and accuracy. Fluency, pronunciation, content, as well as they check your grammatical range and accuracy. तो इन चारों चीज़ों को blend कर आपका स्कोर बनाया जाता है। हाई पास, पास तक तो ठीक है, फेल तक नहीं जाते। Right. Now you have to ask me the question. Yeah, I need to know about part 1 of the test. What is there in part 1? Right. I'm talking about speaking module. Okay. So in speaking module of language cert, part 1 is the kind of like very easiest type of like part. Yeah. Basically in that you will be asked some very general questions just to check your ideas and generals, that how you can just come up with your good content, and can you like really generate your ideas in that or not. So the questions will be about very general topics. For example, your home, your like neighbors, then how is your relationship with the neighbors, and your school life, your college life, university life, like that. And
kind of like job, work, etc. So all of these questions would be like on these kind of topics. All right. Yeah, it seems like it would be easier comparatively. Yes, exactly. And in that, basically, you have to give answers that you should not kind of like drag your answers. Your answers should be like 2 to 3 lines. That is enough. Like 2 to 3 sentences. That is enough. All right. Yes. Point taken, ma'am. You have a question? Yes. Now, my question is, which things should we bring at the time of test? This is the most asked question. Oh yeah. देखें जी, फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ का ख्याल रखें कि जिस भी चीज़ से आपका टेस्ट बुक हो रहा है आइडेंटिफिकेशन से, ये पासपोर्ट से ही टेस्ट बुक होता है, तो आपका वैलिड पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए, जो कि जब आपसे एग्जामिनर पूछे तो आपने उसको कैमरा पे शो करना होता है. अक्सर ऐसा भी होता है कि आपका कैमरा उसको प्रॉपर शो नहीं कर रहा होता, तो फिर वो आपसे कहते हैं कि आप एक पिक्चर लेकर फ़ोन में शो कर दें. तो जब मैंने कहा पिक्चर लेके फ़ोन में शो करें, इसका मतलब है कि आपका फ़ोन अलाउड है, लेकिन ये उस टाइम पर एरोप्लेन मोड पे होना चाहिए, वो आपसे चेक भी कर सकते हैं. और थर्ड चीज़, आपके पास एक प्लेन पेज हो और एक आपके पास पेंसिल हो, और अगर पानी की बोतल आपने पास रखनी है, यू आर अलाउड विद दैट. मैं सिर्फ स्पीकिंग की बात नहीं कर रहा, सब टेस्ट की बात कर रहा हूँ, तो ये आप कर सकते हैं. कोशिश करें कोई बच्चा, कोई बड़ा, कोई बूढ़ा करीब करीब ना हो, जिससे कोई आवाज़ पैदा ना हो, क्योंकि पीछे से कोई बंदा गुजरता है या आप कहीं मुड़ मुड़ के बार बार देखते हैं, तो आपकी स्क्रीन जो है ना, दिस टर्नेट, वो फ्रीज हो जाती है वहीं पर. उसके बाद आपका टेस्ट वो रोक देते हैं, और अक्सर वो आपको नाअहल करार दे देते हैं. नेगेटिव वर्ड है, लेकिन नाअहल भी आप हो सकते हैं लैंग्वेज सर्ट पे, जैसे पाकिस्तान में लोग नाअहल हो रहे हैं. Right. तो या दैट्स हाउ इट इज. Okay, so my next question from you is what we should do if we are having problem with the internet and connecting issues. देखें जी, ये बड़ा जेन्युइन सा कंसर्न है. दे नो दैट यू लिविंग इन थर्ड वर्ल्ड कंट्री, जहाँ पर आए दिन कभी धरने हो रहे हैं, कभी एहतजाज हो रहा है, कभी क्या हो रहा है. तो इट्स अ कॉमन थिंग. अगर आप इंडिया में हैं, पाकिस्तान में हैं, बांग्लादेश में हैं, या किसी भी ऐसी कंट्री में हैं जहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी हो सकती है, या इंटरनेट आउटरीच भी हो सकती है. आजकल शार्क्स वगैरह काफ़ी घूम रही हैं समंदर में, वो शार्क्स चक मार देती हैं केबल्स को. तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है, तो आपने ये करना है कि सबसे पहले अपने एग्जामिनर को ट्राई करें. अगर एग्जामिनर उसको नहीं समझ पा रहा, नहीं सुन पा रहा, तो फिर आप उसकी पिक्चर लेंगे, अपने स्पीड की पिक्चर लेंगे, और आप ट्राई करें कि आप रेगुलर डाटा से LTE या कुछ भी आप 5G 4G यूज़ कर रहे हैं, तो आप उसके साथ आप करें कि आप उसको उनको मेल कर दें, और फिर आप उनको कहें कि मुझे टाइम दें, आप इसको रीस्केड्यूल कर दें. इसमें आपको कोई पेनल्टी नहीं होगी, आप इजीली कर सकेंगे. It reminds me of the question that what happens exactly in part 2 of speaking. Right. In part 2, basically, it contains kind of like role play situation, and in that there are like 2 kinds of role play situation. The first one is kind of like A, and the second one is kind of like B. In that there are 2 kind of situations. First, that like I start, and the second one is like you start. So kind of like examiner will tell you the situation, and he will also tell you that whether you have to start or whether she or he has to start. Okay, right. So for example, if the examiner give you like one situation that okay, we are friends, and now I'm going to ask some questions, so I start. So he would be asking some questions from you, and then we will start like with each other. The other situation can be, for example, if I'm the dentist, or you have a toothache and you have to come, you are coming like in my clinic and you are visiting me, then you start. So the other person or the candidate has to start first. All right, okay. And the time period is kind of like 2 to 3 minutes for that part 2. Okay, Yes. okay. And if it is still not clear with you, I am giving a link of my other video, and we have played tremendous role for you, and we have mimic it out already. So Yeah. you may check that. Okay. Let's move on. Mr. Beg, you have another question? Yes, I have another question. So how can we reschedule our test? Rescheduling without any prior notice और डेट गुजरने के बाद अगर आप rescheduling की तरफ जाते हो, तो which is not a good idea. Right. उसके लिए बेसिकली आपको एक पेनल्टी भी पड़ती है $40 की, जब आपका अकाउंट क्रिएट होता है. अदर देन दैट, अगर कोई प्रॉब्लम हो गई, फॉर एग्जांपल कोई मेडिकल इशू आ गया, कुछ ऐसा वैसा हो गया, तो आप अपना मेडिकल सर्टिफिकेट स्कैन करके शेयर कर सकते हैं, और फिर आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि अलाउ अस टू गेट इट रीस्केड्यूल्ड विद यू. लेकिन ये टाइमली अनाउंस होता है, टेस्ट के बाद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. Okay, right. So my next question from you is, what is the fee structure of Language Cert speaking test? अच्छा, जनरली जो स्ट्रक्चर है $98 का एक पैक है. एक पैक स्पीकिंग का होता है, और एक पैक में लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग तीनों चीज़ें होती हैं. ठीक है, तो SLRW टोटल $196 के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग फ़ी है इनकी. हाँ, कुछ जगहों पर आपको प्रोमो कोड्स वगैरह मिल जाते हैं. कुछ बड़ी कंपनीज के पास प्रोमो कोड्स होते हैं, जैसे गेटवे के पास प्रोमो कोड्स होते हैं जब हम आपका टेस्ट बुक करते हैं.
तो हम आपको एक प्रोमो कोड दे दें, इसकी वजह से आपका टेस्ट जो $98 का होता है वो $75 का रह जाता है, यानी कि आपको तकरीबन $23 डॉलर काफ़ी महंगा हो चुका है वैसे, तो $23 का आपको फ़ायदा उस पर हो जाता है। तो अदर दैन दैट स्टैंडर्ड फी जो है $198। Right, thank you. Yes, you have Previously asked about part 3 with you, right? No, Part 2? yes. Okay, so please tell us about part 3 as well. Right. So in part 3, there is not like kind of a situation will be given to you, but kind of like task sheet would be there. Yes. So in part 3, basically there is going to be kind of like situation, and you will be having, the student will be, or the candidate will be having different task sheet, and the examiner is going to have different task sheet. And in the task sheet, the topic is going to be same, but the points underneath, they are going to be like different. Okay, so it means that the candidate is going to have like different task sheet, but the topic is same. Again, I'm repeating that. So and the examiner will have like different points. Okay, so basically, to my understanding, it is part of discussion based. Yes, it is kind of and a you want to discussion-based reach part. to some logical conclusion of something. Exactly, And I guess we have recorded our lecture on that as well. Yes, exactly. And I think we should put the link. And we will, of course. There are 5 to 6 part 3s which we have made for you, so you can watch them, and they are commonly or frequently asked task sheets of part 3. Right. Okay. Okay. Now, can I ask you another question? Please. Okay. So my next question is, where language cert is mostly acceptable? You see, as I told you already that it was their part of UK, so mostly language cert is acceptable in UK. But now, to my surprise, Australia, Canada, America, they started accepting it. I'm not talking about the embassy, I'm talking about the universities. So universities have started accepting them, so that you get your offer letter, but the embassy does not recognize it so far. For the embassy, for example, if you're applying for Canada, let's say you're applying through SDS stream, so they require 6.56 each of IELTS. But on the back channel, if you want to buy some time to prepare for IELTS and you're in hurry to book your seat for May or September intake, so Language Cert or Duolingo or such tests, they are helpful in the acceptability for the university only. Right. Yeah. Okay. Yes. My last question from you, Ms. Shibra. Please, you're kind enough talking about all. I could have asked the whole from you, but categorically speaking, please mention part 4 as well. What is there in part 4 of speaking language cert exam? Right. In part 4, basically the student will be given a topic. Okay. The student basically, first of all, will be given kind of like 30 seconds to prepare himself or herself on that particular topic. Okay. And on that topic, after that time, he has to speak on that for a consecutive 2 minutes. Great. Yes. It's and more like speaking part 2 of IELTS. Yes, exactly. Yes. Kind of like individual long term. Yeah, true. Right? Okay. So basically, in that, you have to speak on that particular topic for 2 minutes, and after that the examiner will ask some follow-up questions, but that all those follow-up questions will be related to the topic. Okay, so kind of like it consists of like 4 minutes, and the person or the examiner can extend it to like 5 minutes. True. Yes, because it needs a lot of time. So yeah, that's how the things are, I guess. Right. So it is kind of okay if there are some follow-up questions, of course. Right. Mr. You have any other question? Yes, my last question from you is, why we choose language cert instead of other tests? Yeah, it's a tricky question. If you ask me, if you have some impairments, for example, if you cannot go to centers and you want to take your test in the house, so yeah, language cert can be a good resource. As well as if you are not a friendly person, you cannot speak to people, but you can speak to camera or you can speak to a machine or something, so it can also be part of it. Yeah, these are, I guess, 2 or 3 major benefits of taking language cert. It's your choice, but if you have plans to appear in Language Cert, Ms. Shibra and I and my whole team, we are available in IELTS Markaz, Islamabad. We have 2-3 centers in India and Islamabad. So you're more than most welcome, and we do offer our online services. And if you want our free assistance or something, we're just a call away, 051-873-1234, or the same number, 0331-873-1234 is the number to dial to, and you can talk to us directly. Right. Okay. Thank you. God bless Pakistan. God bless Pakistan.